Hello everyone, good evening. Welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Testbook. So, just a second, guys. All right. So, we are back with another English session for your upcoming RBI Grade B exams. Also, SEBI and NABARD exams, phase 1 preparation we are doing here. And today we are going to discuss fill in the blanks. Very, very important chapter in the English syllabus. जितने भी हमारे ये रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम्स होते हैं उनके फेज 1 के पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स के 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं वोकैबुलरी बेस्ड फिलर्स generally they are asked. So in today's session we are going to discuss some very interesting and some challenging questions based on fill in the blanks. So I hope all of you are ready. I hope all of you have uh, liked and shared the video. If you have not liked the video, please do it right now and share it with your friends. चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है. ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन द सेशन. Now today we are going to solve 6 questions here in the YouTube session, and the remaining 6 questions we are going to solve in the masterclass that happens at 10:30 p.m. On the app. All right. Now before going to the first question, just let me quickly remind all the new guys here. This is my Telegram group @Kaustubh Sir _Testbook. This is my Telegram ID, or you can scan this QR code and join me on Telegram. You will get all the PDFs here, and जो भी आपके डिस्कशंस हैं, डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे. ठीक है. ऑलराइट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन्स. बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर. The president's concern for the homeless people was dash and ended as soon as the media left the event. The political article was completely dash and did not even address the major problems in the country or the country was facing. Premeditate, conduit, superficial, auxiliary or collateral. What will be the correct answer, guys? Yes. Okay, so the right answer here should be superficial, because this president is showing the concern for the homeless people, but that concern is very superficial. It is not very sincere. It is not very deep, because that concern, it ended as soon as the media people left, because there were no cameras there. So the president could now show his true colors. So the right answer is superficial. प्रीमेडिटेट का मतलब होता है पहले से ही किसी चीज के बारे में जजमेंट कर लेना कि ये ऐसे होगा या वैसे होगा, है ना. प्रीमेडिटेटेड. ओके. डिसाइड बिफोर हैंड एंड थिंक अबाउट समथिंग बिफोर हैंड. डिसाइड और थिंक अबाउट समथिंग बिफोर हैंड. Okay. Conduit is basically a pipe or a channel or a tube through which liquid, gas or electrical wires can pass. उसको conduit कहते हैं. Auxiliary means something which is subordinate, someone who is subordinate. Lower in rank, it's called as auxiliary. And collateral, generally associated with money or property, such as securities, which is pledged by a borrower to protect the interests of the lender. जैसे हम बोलते हैं ना गिरवी रखना किसी चीज को. So whatever गिरवी जो हम रखते हैं उसको हम कहते हैं collateral. What is the collateral that you are keeping against this loan? वैसे. Okay. चलिए next question on your screens.
Yes, good evening, Aniket. Good evening to all of you, those who have joined right now. This is the English session for your upcoming RBI Grade B exams. We are doing fill in the blanks based questions. So, what do you think will be the right answer? This one is very simple and easy. In some cultures, gods are considered to be dash and all powerful, circumvent, apprise, volitional, cognizant, omnipotent. So, if you look at all powerful here, Sarva Shaktishali. So logic tells you that whatever will come before and should be similar to all powerful. And the only option that goes close to all powerful is omnipotent, which means Sarva Shaktishali, a person or something, someone who has all the powers. है ना, all powerful ये जो शब्द है उसी का synonymous word है. Okay, cognizant का मतलब होता है someone who is aware of something, someone who is alert about the surroundings. हमारे आजू बाजू क्या चल रहा है उसके बारे में जो अवेयर होते हैं, अलर्ट होते हैं, उनको उनको कॉग्निजेंट कहते हैं. वोलिशनल मींस रिलेटिंग टू द यूज ऑफ वंस विल, जो वॉलेंटरी है, जो विल से आता है ना. वोलिशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड वॉलेंटरी. मेरे अपने खुद के विल से है, किसी ने मुझे जबरदस्ती नहीं की. ओके, दैट इज कॉल्ड वोलिशनल. अप्राइज इज अ वर्ब. अप्राइज मीन्स टू इन्फॉर्म समवन अबाउट समथिंग. किसी को किसी चीज के बारे में बताना, इन्फॉर्म कर देना, है ना. आई विल अप्राइज यू ऑफ द न्यू अपडेट्स, है ना. एंड सर्कमवेंट ये भी एक वर्ब है. इट मीन्स टू फाइंड अ क्लेवर वे ऑफ अवॉइडिंग डिफिकल्टी और ए रूल. कोई डिफिकल्टी को, किसी रूल को, किसी ऐसी चीज को अवॉइड करने का, है ना, सर्कमवेंट करना, उससे साइड से निकल जाना, उसका एक क्लेवर तरीका. ओके, यस. तो ये बाकी सारे ऑप्शंस नहीं आएंगे. एंड हियर सी, बिकॉज द डिक्टेटर वाज ओमनीपोटेंट, he did whatever he wanted without suffering any of the negative consequences. Simple, very easy. Yes. Okay, so this was the second question. Let's go to the third question now. This is the third question on your screens. All of you, those who have joined right now, welcome to the session. एक बार जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए. The filmmaker is famous for making dash movies that are melodramatic in nature and high on the budget. कैसी फिल्में बनाता है वो? हाई ऑन द बजट फिल्में बनाता है, मेलोड्रामेटिक फिल्में बनाता है या बनाती है फिल्म मेकर. तो ये जो मूवीज है वो कैसी होंगी? पैल्पेबल मूवीज, अनइक्विवोकल मूवीज, ऑप्युलेंट मूवीज, प्री डेस्टाइंड और प्री डेस्टिन्ड मूवीज, या इनएलेक्टेबल मूवीज. सो हियर हमें एक हिंट मिल जाती है. हाई ऑन द बजट मतलब क्या है? जिसका बजट बहुत ज्यादा है, फिल्म का बजट बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत पैसे लगाए हैं फिल्म में. तो जिन फिल्मों में बहुत पैसे लगते हैं वो फिल्में कैसी होती है? ऑप्युलेंट. ऑप्युलेंट का मतलब होता है रिच. समथिंग दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी और समथिंग विच इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ मनी, है ना. So यहां पर भी देखिए, द मोस्ट डैश पार्ट ऑफ द सिटी, द मोस्ट रिच पार्ट ऑफ द सिटी, शहर का सबसे अमीर इलाका अभी क्या हो गया है? हैज नाउ बीन मार्ड बाय शैंटीज एंड मेकशिफ्ट होम्स ऑफ द पुअर. एक जमाने में शहर का जो सबसे रिच एरिया हुआ करता था वो अभी शैंटीज यानी कि छोटे छोटे घर और मेकशिफ्ट होम्स यानी कि ऐसे घर जो एक प्रकार से शेड्स से बनाए हुए हैं, है ना, या इम्प्रोवाइज्ड होम्स हैं, झोपड़पट्टी जैसा है, आज गिर गया तो कल किसी और जगह बांधेंगे, इस प्रकार के घर है ना.
सो रिच यहां पर चलेगा, ऑप्युलेंट ये सबसे करेक्ट आंसर बन जाता है। पैल्पेबल नहीं, पैल्पेबल का मतलब होता है समथिंग दैट इज इजीली फेल्ट बाय द सेंसेस और बाय द माइंड, जो या तो आपके माइंड से या आपके सेंसेस से आप इजीली फील करते हैं, पैल्पेबल। पैल्पेबल चेंज हैज हैपेंड इन हिज फिजिक बिकॉज ही हैज बीन गोइंग टू द जिम फॉर द लास्ट 3 months, राइट। अनइक्विवोकल मीन्स विदाउट एनी चैलेंज, without any challenge, unchallenged. Unequivocal support means no challenge at all, total support, complete support. Opulent is rich, predestined is something which is decided beforehand, and ineluctable means unable to be resisted or avoided, जिसको आप escape नहीं कर सकते, जो होने ही वाला है ना, inevitable kind of, inevitable, समथिंग विच कैनॉट बी अवॉइडेड, जो होके ही रहेगा, इनएलेक्टेबल, है ना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। यस, आई एम वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर एवरी क्वेश्चन राहुल, आंसर मैं बहुत देर बाद ही कर रहा हूं। चलो ये वाला ट्राई करो सब लोग। I will wait for some more time. The event management's dash prep. Prep is short form for preparation. And attention to detail ensured that the program was a smashing success, है ना, smashing hit भी कहते हैं। तो ये जो इवेंट मैनेजमेंट है उनका प्रिपरेशन कैसा है, कैसा रहा, एकदम डिटेल्ड, है ना, हर एक बारीक से बारीक चीज को अच्छे तरीके से उन्होंने प्लान किया और अटेंशन टू डिटेल किया। इससे ये इंश्योर किया कि ये जो प्रोग्राम है इट वाज अ स्मैशिंग हिट, सबको पसंद आया, है ना, एवरीवन लव्ड इट। द स्टूडेंट्स क्राफ्टेड द मॉडल ऑफ द कार विथ डैश डिटेल्स, है ना, व्हाट काइंड ऑफ डिटेल्स, मेटिकुलस। यस, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट हियर। मेटिकुलस मीन्स समथिंग विच इज डन इन डिटेल, बारीकी से ध्यान से किया हुआ, इन डिटेल। Okay, tentative means uncertain or not definite. What are the tentative dates of the examination? Maybe on the 25th, maybe on the 26th, we don't know, it is not certain, है ना, change हो सकता है, subject to change. Wavering means changing, जो change हो सकता है, जो unstable है ना। अनवेवरिंग ये सुना होगा आपने, अनवेवरिंग, अनवेवरिंग सपोर्ट मतलब ऐसा सपोर्ट जो चेंज नहीं होगा, जो फिक्स्ड है, जो स्थिर है, जो स्टेबल है, जो चेंज नहीं होगा, इज कॉल्ड अनवेवरिंग। एंड द ऑपोजिट ऑफ अनवेवरिंग इज वेवरिंग विच मीन्स जो चेंज होगा। एश्योर्ड इज गारंटीड, something that gives you a guarantee, something that gives you an assurance. And incontestable is again something which cannot be challenged, you cannot contest it, you can't challenge it, something that cannot be challenged. It could be a statement, it could be a person, it could be anything जिसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट। As you can see, the vocabulary of the options is very, very interesting today. All the 5 options that are there in each question, they are very good words. So I request all of you to write down all these words, to take the screenshots. I will send the PDF, of course, on my Telegram channel. Those who have not joined me on Telegram, please join me on Telegram. This is my Telegram ID. You will also find the Telegram link in the description below. You will get all the PDFs on Telegram. This lecture happens every Monday to Friday 10 PM 10 PM to 10:20 10:25 है ना, 20-25 मिनट का सेशन होता है। And immediately after the YouTube session we have a master class which is also a free class, but the master class happens on the app.
टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप ये डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, जस्ट लॉग इन करना है एंड फ्री क्लासेस वाले सेक्शन में आपको रेगुलेटरी बॉडीज के हेडिंग के अंडर इंग्लिश के फ्री क्लासेस मिलेंगे, 10:30 को होते हैं। तो यही टॉपिक हम वहां पर भी कंटिन्यू करते हैं, यूट्यूब का सेम टॉपिक वहां पर मास्टर क्लास में कंटिन्यू करते हैं 10:30 बजे। सो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू फिल इन द ब्लैंक्स टुडे, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। एनीवे, लेट्स लुक एट दिस। ऑल्दो शी इज ए सेलिब्रिटीज डॉटर, ये एक सेलिब्रिटी की बेटी है, भले ही एक सेलिब्रिटी की बेटी है। शी इज वेरी डैश एंड हैज नो एयर्स अबाउट हर स्टेटस। कैसी है वो? ग्रिगेरियस है। ग्रिगेरियस का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो दूसरों के साथ सोसाइटी में लोगों के साथ जिंदगी जीना या टाइम स्पेंड करना जिनको अच्छा लगता है। लाइकिंग टू बी विथ अदर्स स्पेशली इन ग्रुप। तो ऐसा नहीं है कि वो सेलिब्रिटी की बेटी है तो उसके दिमाग में हवा चली गई और वो अकेले रहती है और अपने आप को क्या है, क्वीन समझती है, ऐसा नहीं है। शी इज वेरी ग्रेगेरियस, शी लाइक्स टू बी इन पीपल, शी लाइक्स टू लिव अमंग पीपल, शी हैज अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, वैसे, है ना। मार्केटिंग एंड सेल्स इज एन अप्रोप्रिएट लाइन ऑफ वर्क फॉर अ पर्सन हु इज ग्रेगेरियस एंड नोज हिज नंबर्स वेल। ऐसा पर्सन जो ग्रेगेरियस है, जो सोसाइटी में रहता है, जो लोगों में रहना पसंद करता है, उनके लिए मार्केटिंग और सेल्स ये बेस्ट ऑप्शंस है ना। इररेजिस्टिबल मीन्स समथिंग दैट यू कैन नॉट रेजिस्ट, जिसको आप रोक नहीं सकते। जैसे you look at your favorite dish and you have that irresistible desire to eat it. Inexplicit means something that cannot be expressed clearly, something which cannot be explained in easy words. Inexplicit. Inexplicable. Cursory means quick and short, something which is a cursory. Give this a cursory reading, एक क्विक रीडिंग दे दो, एक शॉर्ट रीडिंग दे दो, या फिर समथिंग विच इज डन इन अ हरी, जो जल्दी जल्दी में किया जाता है, उसको भी कर्सरी कहते हैं। नॉन प्लस्ड, नॉन प्लस्ड मीन्स कंफ्यूज्ड, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, है ना, जो कंफ्यूज्ड है और जिसको या जिसको समझना नहीं आता, अंडरस्टैंड नहीं होता, उसको नॉन प्लस्ड कहते हैं। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के यूट्यूब सेशन का, देन वी विल गो टू द मास्टर क्लास सेशन। The cop could not take a statement from the man because he was bleeding and his pain made his speech far from dash. This man was bleeding, so the cop could not take a statement from him. Obviously, he must not be able to talk. So, whatever speech he had, whatever the way he was talking, it was far from lucid. Lucid means easy to understand. It was far from lucid means it was not lucid. It was not very easy to understand because he must be mumbling in his mouth, you know, because he's injured, he's bleeding, right? And a group of friends chose a perfectly lucid day to go out for a drive. A day in the sun at the beach. Lucid in this case is a very simple day, a very easy day, or a very, a day where there are no problems, where there are no issues. Okay, so the right answer is option number 1. Indurate means to make something unfeeling or to make something more stubborn, to make something more obdurate. So basically to ruin something, to make something more complicated is to indurate something. This is a verb. Okay. Brutal is an adjective. It means cruel or violent or complex or completely without any feelings. Cogent, give me a cogent answer, means strongly expressed and clearly expressed. Something which can influence other people, something which can convince other people to believe what you're saying. It's called cogent. And potent means strong or powerful, something which has a potential to do something. Someone who has the potential is potent. You know? So the right answer is lucid, right? So these were the 6 questions of our YouTube session. We will have a masterclass session and we will continue our discussion on fill in the blanks, but that will happen in 10 minutes. है ना?
डाउनलोड कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग, and you will get all the master classes there. Now, before concluding the session, I would just like to remind all the new guys, this is our combined Telegram group at the rate Testbook Regulatory Bodies. You can also scan this QR code here and you can join this Telegram channel where you will get all our teachers at one place. You will get all the PDFs and you will get all the YT session links. Okay. ऑल राइट, सो विल स्टॉप हियर फॉर द डे. आज के लिए इतना ही. सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल. Yes, thank you so much for joining and watching the session. Okay, Prahelika says, how come you are so calm? I don't know. Maybe it is just the way I am. All right. ठीक है, मास्टर क्लास में जुड़िए सब लोग. टेक केयर, बाय बाय.